Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. Today we are doing clean girl aesthetic perfumes. ये fragrances आपकी बहुत अच्छी gym fragrances भी हो सकती हैं and they can be very good office fragrances as well. I am sitting here with my water because it's crazy hot in Hyderabad. Fridge का पानी है इसमें and I cannot do without cold water these days at all. So starting off with a sip of water and let's get into these refreshing fragrances that will just uplift your spirits और सबसे गर्म दिन को भी वो एक बहुत अच्छा दिन बना देंगी. So let's get into these. पहला recommendation जो मैं आपको देना चाहती हूँ, nobody is taking this recommendation seriously. Everybody is just thinking कि हाँ ठीक है mention कर दिया, but no. If you want a refreshing fragrance, trust me, if you want to smell fresh and classy at the same time, you need CK Into You for her. Kangya. Yeah, Into You for her. So you need this fragrance in your collection because this is just an amazing lemony fragrance. It literally smells like जैसे आपने अपने ऊपर नींबू निचोड़ लिया हो. It's that refreshing. In the opening, it is super zesty, super fresh, super amazing. सबसे गर्म दिन को भी it has the potential of turning it into a very good day and you will get compliments on this. Trust me, it's a very very good fragrance. क्योंकि इसकी अच्छी बात क्या है ना कि it's not just a simple zesty fragrance. It has a lot more going on in it. इसमें एक बहुत एक अच्छा character है इस fragrance का. So it has a bit of cactus and vanilla in the base. तो वो इसको थोड़ी सी डेप्थ ड्राई डाउन में प्रोवाइड करता है बट इट मेजरली रिमेन्स अ जेस्टी फ्रेग्रेंस. तो अगर आपको क्लीन और हाइजेनिक स्मेल करना है ना, दिस इज योर जूस इन हियर. दिस इज अ 150 ml bottle and I think you will easily get it from Perfume Addiction in around 2500 rupees. So this can be a great investment. इनिशियली जब ये बॉटल आई थी मैंने आप लोगों से हमेशा बोला कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट द लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट I was wearing this fragrance in combination to another fragrance जो कि इसी लिस्ट में मैं आगे आपको बताऊंगी. So the combination of these two was smelling just amazing and lasted easily for 6 hours on me. अगली fragrance जो है वो बहुत ही perfect office fragrance तो है ही, पर आप इसे जिम भी लगा के जा सकते हो and trust me, guys will notice this क्योंकि guys का जो brain होता है ना वो एक certain तरह से work करता है and they do get attracted to fresh fragrances as well, where they want you to smell sweet on dates. Too many messages. I'm so sorry. I need to put my phone on silent. So yeah. तो जहाँ उन्हें sweet fragrances हमारे ऊपर intimate times के लिए या date time के लिए पसंद आती हैं, they want us to smell fresh as well. So for that, I have Skin Titan Pristine for you. This is a beautiful cardamom citrusy fragrance with a lot of character and a lot of kind of vetiver kind of notes to it. बहुत ही interesting cardamom, lemony and zesty fragrance है ये, जो कि बहुत clean vibe provide करती है. It's very beautiful, it's affordable, it's just perfect for your pocket and for the kind of longevity that this provides. It literally smells like this clean bottle और इसका बहुत ही clean vibe है. It just smells like a woman who is confident, independent and very hygienic and really takes care of herself. उस तरह का इसका vibe है. God, why have I not been wearing this? It's time I pull this one out now and wear it like crazy. A fragrance that screams clean aesthetic and clean look, or let's say super hygienic, and that is Elegantly Tokyo from Zara. अब आप बोलोगे कि Elegantly Tokyo तो अवेलेबल नहीं है. मैंने अभी चेक किया, it is in the coming soon fragrances on Zara and this one मैंने बोला था ना कि ये discontinue नहीं हो सकती. This is a line in I think collaboration with Jo Malone if I'm not wrong. But yes, ये नई पैकेजिंग में वापस आ गई है and Elegantly Tokyo is God. This is a beautiful floral clean fragrance which is slightly screechy and also a little musky
जो कि इसको काफ़ी लाउड, प्रोजेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग दोनों ही बनाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ दो ज़ारा फ्रेग्रेंसेज जो कि क्लीन भी है लेकिन अपनी स्क्रीचीनेस की वजह से ये लाउड और प्रोजेक्टिव है. दिस फ्रेग्रेंस विल get you compliments left, right, center. This will be noticed. This is a perfect summer fragrance. चाहे जिम लगा के जाओ, चाहे ऑफिस लगा के जाओ, especially for office. It's just so good. I cannot tell you how good this is. And I have been using it quite a lot. Dent उतना आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके ज़्यादा स्प्रेज नहीं चाहिए होते. मैंने बोला ना, ये थोड़ी सी मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी स्क्रीची है. There will be some smooth fragrances coming in this list. But for now, we are concentrating on those super fresh kind of fragrances. इसमें बहुत strong jasmine का note है और वो jasmine इसमें बहुत ज़्यादा fresh, refreshing, almost like dewy jasmine with a very strong, clean, how do I say, clean, soapy vibe to it, like a luxurious soap. So this is amazing. This is your must-have. This is your smell fresh and elegant and classy without any doubts. Now another one in the same line is Captivatingly Paris. This one is a clean soapy fragrance which is sweet. तो इसमें थोड़ा सा फ्रूटी टच है. सो दोज फ्रूटी नोट्स आर प्रोवाइडिंग इट स्वीटनेस, लेकिन फिर भी इसका इन दी बैकग्राउंड एक बहुत ही शैम्पूई और सोपी या बॉडी वॉश जैसा फील है. गॉड, कभी कभी मन करता है ना कि यार मैं आप लोगों को कैमरा में से परफ्यूम का स्मेल करा पाती. आई रियली समटाइम्स फील दैट वे. सो दिस इज़ अमेजिंग. जिन लोगों को बैक इन द डेज ज़ारा वुमन गोल्ड पसंद था, ये उसका स्लाइटली स्मूदर सॉफ्टर वर्जन है, but still quite clean. If you want your fragrance to be clean and body wash kind but in a sweet fruity way, then you can go for Captivatingly Paris. This one has the longevity of around 5 hours, nothing more than that. A fragrance that I am obsessed with, अगर clean fragrances की बात करूँ तो, and the more I'm wearing it, the more I'm realizing it's not exactly like the one that I mentioned, and I'm talking about Nassim Twin Paradise. पता नहीं नाम दिख रहा है आपको? Anyways, what I want to tell you is that I've already used half of this sample and I'm totally planning on buying a full bottle on Nassim Twin Paradise. Nassim Twin Paradise एक बहुत ही beautiful, clean, soapy, powdery kind of fruity floral. ये majorly एक white floral vanilla powdery fragrance है और coconut इसमें ना बहुत हल्की सी creaminess इसको provide करता है, which is not exactly like a tropical kind of fragrance. I would rather call it a very clean and very beautiful, powdery, refreshing and sophisticated kind of vacation fragrance. जैसे कि आप किसी resort में हो and you're enjoying this kind of fragrance, it has that kind of vibe. इस वीडियो को बंद करने के बाद I promise you I'm going to order a full bottle in this because, और मैं अपनी बॉटल ना Amazon से मंगाऊंगी so that I can tell you कि Amazon से इसको मंगाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि यार I buy a lot of fragrances from Amazon और मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती है. So Nassim Twin Paradise, let me try and explain it better. This is your classy, elegant, क्लीन सोपी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लोरल्स हैं. सो क्लीन सोपी पाउडरी फ्रेग्रेंस जिसमें कोकोनट बहुत हल्का सा, कोकोनट इसमें मेजरली फोरफ्रंट नहीं ले रहा है, इट्स जस्ट एडिंग टू द स्मूथनेस ऑफ द फ्रेग्रेंस. तो वो स्क्रीचीनेस जो हमें एलिगेंटली टोक्यो में मिलती है, वो स्क्रीचीनेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. दिस इज योर स्मूदेस्ट पाउडरी फ्लोरल vanillic fragrance. It's beautiful, just the perfect amount of sweetness and the perfect amount of freshness that you get from it. और सबसे अच्छी बात, ये water based perfumes हैं, तो अगर आपकी sensitive skin है मेरी तरह, तो आप इसको जब, अच्छा एक ना गलती मत करना, I'll show you. एक गलती मत करना, अगर आपने इस fragrance को, you see that? Yeah. अगर आपने इसको किसी कपड़े पे स्प्रे कर लिया ना, so this is what you will be left with on your clothes. So don't do that. Just spray it on your skin because it just becomes like this, okay? So spray it on your skin. It's very skin friendly. मेरी skin को ये बिल्कुल irritate नहीं करती है, and that is why I'm completely and totally planning on buying a full bottle in this. और water based होने के बाद भी this fragrance lasts on me all day. I kept getting whiffs of it by the end of the day
and I was so amazed by that. A very beautiful, clean, coconutty aquatic fragrance for these summers has to be Hawaiian Sea Breeze from Nykaa. Very new launch, very beautiful fragrance. कभी नहीं सोचा था कि Nykaa की fragrances मुझे इतना impress करेंगी, but this one has just taken my heart. ये somewhat कुछ बाथ एंड बॉडी वर्क्स के बॉडी मिस्ट्स जैसी लगती है, और मेरे पर्सनल ओपिनियन में दिस इज़ अ लाइटर वर्जन ऑफ Cheirosa 39 फ्रॉम Sol de Janeiro, और मैंने 39 अभी डीक्लटर किया है बिकॉज आई नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, मैं उसके साथ गेट अलॉन्ग नहीं हो पाती हूँ, बट दिस is beautiful. This is just the perfect amount of smooth and aquatic, watery, and I don't know, it smells like some clean sea breeze and coconut water by the side of the seashore. It's beautiful. It's beautiful. You need this in your collection for these summers. और longevity आपको इससे बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी. You'll just get 2 hours or let's say 3 hours from this. खींच खांच के अगर आपकी skin पे fragrances long lasting रहती हैं तो so in that case it can perform better for you, but for me this is just a 2-hour fragrance और उसके बाद इसको touch up की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन for all those who are on budget and cannot spend too much on fragrances, it's a very good option for them. अगर कोई सबसे गर्म दिन होगा और बहुत गर्मी लग रही होगी, you'll be sweating like crazy and you would want a fragrance to just lift you up, to just make you feel better, to cool your body temperature down. In that case, I would suggest you to get apple juice for yourself. Apple juice is a beautiful green apple, juicy and powdery in the dried on fragrance. It literally smells like green apple juice in the opening, like freshly squeezed green apple juice, and then ये बहुत ब्यूटिफुल पाउडरी फ्रेगरेंस बन जाती है इन द ड्राई डाउन. दिस इज़ नॉट एन ओवरली प्रोजेक्टिव फ्रेगरेंस, इट्स नॉट अ बीस्ट मोड काइंड ऑफ फ्रेगरेंस. स्पेशली जब से नई फॉर्मुलेशंस आई हैं, दे आर नॉट एज लॉन्ग लास्टिंग एज द ओल्ड वंस, क्योंकि मेरे पास एक ओल्ड पैकेजिंग भी है जिसमें इतना सा एप्पल जूस बचा हुआ है. सो आई कैन कंपेयर एंड ऑलरेडी टेल दैट दिस वन इज़ नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग, बट what matters is the kind of fragrance that is inside. आप इसका छोटा पैकेजिंग खरीद लो, उसको अपने साथ कैरी कर लो, वो तो पॉकेट में भी फिट हो जाता है, and then keep touching it up all day long. ये आपको मॉडरेट प्रोजेक्शन देगी और अराउंड 4 से 5 घंटे की लॉन्जिविटी देगी, लेट्स से, क्योंकि पिछली वाली से तो मुझे 8-9 घंटे की लॉन्जिविटी भी मिलती थी, बट दिस वन विल जस्ट गिव यू 4 to 5 hours ऑफ लॉन्जिविटी. बट येस, इट्स ग्रेट एंड इट्स अ ग्रेट classy, sophisticated office clean fragrance that will just lift your spirits. I have a sample for Issey Miyake Leodesi, और ये बहुत beautiful white floral aquatic sweet fragrance है. There is not much of a complication to it, but still it's a very beautiful fragrance. It has these beautiful white florals going on in it with a touch of very beautiful dewy wateriness to it, और उस सबके साथ साथ ये sweet भी है, तो ये एक बहुत ही refreshing kind of summer feminine fragrance है, which will give you that feeling of smelling clean and hygienic. अगर आप डिज़ाइनर की डायरेक्शन में जाना चाहोगे and you don't want to use anything in the affordable lines, then you must look into Issey Miyake's L'Eau de Issey. A very long lasting and a very sophisticated and smelling like money clean fragrance is Prada La Femme. Again, I have just a sample, but I just love this one. The sample is so damn cute, and I always say कि ये ऐसा smell करती है जैसे कि आप किसी vacation पे हो and you're in a resort and you went for a spa, and now that you're out of the spa, you're smelling of those clean spa products and very luxurious spa products, and it's just smelling fresh and clean and just mesmerizing at the same time. Very soapy, sweet, clean kind of fragrance, which is very beautiful. So if you want to smell like that you're just out of the spa and you're smelling amazing, this is the one to go for. बहुत long lasting fragrance है. This will be your well spent 10,000 rupees if you're looking for a clean fragrance. A fragrance that I have gone crazy over, have been wearing it back to back and
सैम्पल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एंड दैट इज़ शगाफ ऊद टोंका। अब आप कहोगे कि अरे लोग तो इसको विंटर फ्रेगरेंस बोल रहे हैं, आप कैसे इसको क्लीन फ्रेगरेंस की कैटेगरी में डाल रहे हो? आई टेल यू व्हाट, दिस इज़ अ क्रीमी टोंका फ्रेगरेंस, आई अग्री टू दैट, बट इसमें एक बहुत लग्जूरियस, क्लीन, ऑलमोस्ट सोपी नोट है या शैम्पूई नोट है कह लो। इसमें एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सा क्लीन नोट है जो कि फ्लोरल से आता है, और वो नोट समहाउ मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ इज़ मोर फॉरवर्ड कंपेयर्ड टू द क्रीमी टोंका। तो क्रीमी टोंका मैं इसको ये बुलाऊंगी कि मेरे लिए ये एक बहुत ही क्लीन बट क्रीमी फ्रेग्रेंस है, एंड आई नीड अ सिप ऑफ वाटर, ओ गॉड। I've used it this much and my full bottle is already on its way. आज या कल में वो आ जाएगी. So the next time I'll be on screen, I will be with that bottle. मैं जितना ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हूँ ना, उतना ज़्यादा मुझे realize हो रहा है that this is definitely going to become my signature scent, especially because this is a beautiful balance of the creamy tonka notes along with the clean notes in it. तो अगर आपकी body chemistry मेरी तरह है और अगर इसके clean notes को वो enhance करेगी, then this is going to be a very very good purchase for you. Anyways, whether you're looking for a clean fragrance or not, Shagaf Oud Tonka is a fragrance जो आपकी collection में होनी ही चाहिए if you are a perfume junkie, because this DNA is very unique, it's very modern, it literally smells like a goddess, it smells like an angel who is just wearing white and looking beautiful and smelling, I don't know, clean or something. Beautiful fragrance, get it. And yeah, the longevity on this is just crazy. It can last on your skin for 12 plus hours. It can last in your hair for 2+ days and on your clothes also for 2 days. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Love you bunches, honey crunches. Mwah.